like Publicis Sapient is coming to my campus in this particular days. I searched and did for reads. Did for reads is the best portal for B.Tech students. Two questions were of coding question and one was of JavaScript based question. Like you have to do a particular question on JavaScript. Okay. अगर कोई और तो JavaScript नहीं आता This यार. is specific requirement. Luckily मेरे को JavaScript आता था. सैमसंग प्रिज्म में Samsung गया था. Prism. तो Great. इसीलिए luckily थोड़ा आ गया कि I know that this question can be solved in JavaScript using this. इसीलिए luckily So hello everyone, welcome to our YouTube channel, and today we are back with a new podcast. So we have Vinayak with us, who is he was a research intern at Samsung Prism, a Google Cloud Facilitator, and an upcoming SDE at Publicis Sapient. Hi Vinayak, Hi Saurav. nice to meet you. So before we start, I have a lot of questions to ask to you. But before we start, can you tell us about your background and how did you became interested in pursuing a career in B.Tech? Like, sure. Hello everyone, my name is ASDT Vinayak. Currently pursuing B.Tech final year Computer Science Engineering at Sikshana Sandhan University. And for the background for B.Tech, like in 11 12, I have chosen C++ as I was interested in computer science. And after class 12, I joined B.Tech Computer Science Engineering at ITER and got CSC branch and want to explore more. So I have taken the CSC branch. So Vinayak, so we know you're a pro application developer, and you have collaborated on multiple apps. You've worked in teams, hackathons, and multiple projects. So what inspired you towards moving towards your application development roadmap, and what helped you the most in this learning journey? Okay, sure. Like in during my college days, like one of my senior had taken a session on app development. I was the attendee of that app development session, and that inspired me to search on Google that how we can make apps like WhatsApp, YouTube, which we use daily. Wow. And while exploring Google, I searched on Java that from Java we can make apps. So it is called native app development, Okay. like the apps which can be installed in Android phones. Okay. Nice. And I learned the basics of Java, and I have made some basic apps like calculator, to-do list, because it is the basic steps for app development. Acha. Wow. Interesting. And after researching like for app development, I got the language Flutter. Dart. Dart is a language and Flutter is a framework, which is developed by Google. Wow. And I was surprised that basic example of Flutter application was Google Pay, which was developed by Google itself only. The UI amazed me, and I had an interest to learn it. So I explored YouTube. Like there are Flutter Dev channel, which is Okay. official Flutter channel of the YouTube community. So I explored it and learned the basics. Acha. And I made some apps like OTEs. It's Okay. one tap emergency service app, in which user can get the nearest emergency services available at your danger places like nearest police station, nearest ambulance, and also made a college biometric attendance application. It was a part of a hackathon in which we maybe proposed the solution to systemize the biometric application in electronic form, like making the biometric applications in your fingertips. Through your finger, you can give biometric attendance at any time, and the location will be monitored so that your data will be correctly accurate or not. Like if you are not misleading any person or not. And more many projects I have made, and one of my project was file encryptor, Okay. in which I was excited. Like you'd see Acha. in WhatsApp, messages are end-to-end encrypted. End-to-end encryption. Right. Like what is encryption? And while I explored encryption, I learned that there are many algorithms like AES, RSA, Okay. in through which we can enhance our security. So I created a file encryptor software in which you can encrypt your PDF files or document files so that it will be more secure. Okay. So what kind of encryption techniques do you use for this? In my project, it was AES, AES. AES, and but there are many algorithms like RSA, SHA, 255. So you can use many more. So even if we have an entire subject on cryptography and Cryptography. network security, so it must be really interesting working on this project, and it might have also helped you in curriculum as well. Sure. So Vinayak, was this application or this software that you have built?
Like it is a program which Okay. runs through C++. Okay. So it is a desktop program. Wow, great. So when I you talked about your projects, आपने अपने projects बताए, आपने अपना team projects बताए, कुछ कुछ जिसमें आपने काम किया है. क्या आप थोड़ा सा अपने लर्निंग जर्नी पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं कि आपने कैसे क्या यूज किया है, क्या क्या कहाँ से आपने सीखा, आपने जैसे बताया फ्लटर का जो ऑफिशियल चैनल है उसमें आपने बहुत से लर्निंग ट्यूटोरियल्स देखे हैं. आप उसके अलावा और क्या क्या चीजों से आप नेटिव और फ्लटर सीखे हो? मतलब बेस्ट एग्जांपल हो रहा कि गेट योर सीनियर हेल्प, लाइक एक्सप्लोर योर सीनियर्स विजन. तुमको सीनियर्स को पूछना पड़ेगा कि भैया क्या है, तुम ओके. डीएसए कहाँ करना है भैया, क्या कौन सा कंपनीज आएंगी भैया हमको, और आप क्या किस फील्ड में जाना चाहते हैं. अच्छा. तुम सीनियर से गाइड लेके बोल सकते हो कि हमको और कैसे सीखना है. ओके. इसमें तुम अपना एकेडमिक्स भी आएगा, जिससे तुम हायर स्टडीज भी जा सकते हो. ओके. तो समराइज मतलब आप आपका बेस्ट पहले. इज हेल्प, टेक हेल्प ऑफ योर सीनियर्स. बिकॉज कॉलेज लाइफ में सीनियर्स विल बी मोस्ट हेल्पफुल. ग्रेट. सो क्योंकि सीनियर्स एक्सपीरियंस होते हैं, उन्होंने कुछ कुछ गलतियां भी की हैं, उन्होंने कुछ सही तरीके भी अपनाए हैं अपने सीखने के टर्म्स में. तो आप उनके उन्होंने जो गलतियां उनसे आप सीखो, और प्लस आपने उन्होंने क्या तरीका यूज किया है सीखने के लिए, आप उसको इम्बाइब करोगे तो आपको ज्यादा एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज रोड मैप मिलेगा. राइट. तो आप सीनियर्स को रीच आउट कर सकते हो. दिस इज वन टिप. अनदर थिंग दैट विनायक ऑलरेडी समराइज इज दैट आप प्रोजेक्ट्स पे काम करो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में. और आप चाहे वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हो या फिर वो टीम प्रोजेक्ट्स हो. राइट विनायक? या ग्रेट. इंडिविजुअल, और तुम्हारा इंटरेस्ट है, लाइक तुमको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, या मतलब वेबसाइट बनाना है या एप्स बनाना है या डॉक्यूमेंटेशन लिखना है, लाइक तुम्हारा इंग्लिश अच्छा है तो तुम डॉक्यूमेंटेशन में भी जा सकते हो. ओके. विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यू लर्न. There are websites which helps in give providing internship for documentation also. So you can explore that also. अगर तुमको कोडिंग थोड़ा बेसिक आता है तो तुम उस पर एडवांस कर सकते हो. वेब डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन, ऐप डेवलपमेंट. वाओ. ग्रेट. So it's, you have to explore. ओके. एंड इवन फॉर डॉक्यूमेंटेशन एज विनायक हैज ऑलरेडी साइटेड, आप मत सोचो कि वो एक नॉन टेक्निकल काम है. इवन दैट रिक्वायर्स अ ग्रेट टेक्निकल स्टफ. Sure. वी नीड टू अंडरस्टैंड द कोड एज वेल एज डॉक्यूमेंट इट वेल, एंड देयर आर स्पेसिफिक रूल्स फॉर प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन एज सच. सो विनायक, आप आप हमें पता है कि आप सैमसंग एक्स इंटर्न रहे हो, सैमसंग प्रिज्म में रहे. So that is a program that is run in colleges. So हमारे कॉलेज में again for this year Prism आ रहा है. So it's gonna start or already has started. So can you tell our viewers are very keen to know about your experience and the projects that you have built during this period, and what were the tips, what tips and guidance would you like to share to our viewers in terms of acing that program? या लाइक मेरे को भी एक्साइट हुआ था कि कैंपस में सैमसंग प्रिज्म आया था मेल. मैंने मेल देखा, फिर सर्च किया कि सैमसंग प्रिज्म है क्या. उसमें प्रोसेस था कि कोडिंग टेस्ट होगा. कोडिंग मतलब क्या, डीएसए है. आई थिंक 3 कोडिंग क्वेश्चंस वर देयर इन 90 मिनट्स. यू हैव टू सॉल्व 3 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स. Okay. these DSA के बेसिक थे, from array string only. Okay, stack basic cube, questions. basic questions. Like you had an atom in a shot. क्या आप टॉपिक्स बता सकते हो? array strings, stack Array cube. string, linked list, Okay. stack cube, cube तक. Okay. So graph will be more advanced, but it may be tough. But graph थोड़ा लेट में है. उससे पहले तुम basics पे help कर सकते हो. Okay. और try to cover at least one question. कुछ भी attempt करो. वो coding question है तो attempt करो. Okay. क्योंकि कंपाइल करने से भी तुम ब्रूट फोर्स भी यूज करोगे, ओ ऑफ एन स्क्वायर में जाएगा. उससे भी तुम एटलीस्ट 5-6 टेस्ट पास कर सकते हो, जिससे तुम शॉर्टलिस्ट हो सकते हो. अगर बाकी लोग कंप्लीट नहीं किए तो तुम यू विल गेट एन एज. सो दैट वाज अ प्रोसेस, एंड आफ्टर क्लियरिंग द कोडिंग टेस्ट इट वाज अ 6 months internship program. Okay. And in which I get the exposure to learn ML part. Like हम लोग जानते हैं गूगल का वॉइस असिस्टेंट गूगल है, सीरी है, Yes. इस अमेजोन का एलेक्सा है. Okay. ऐसा सैमसंग का बिट्सपी था. अच्छा. सो मेरे को बिट्सपी में काम करने का मौका मिला, जिससे तुम अगर यूजर कोविड केसेस पूछता है तो बिट्सपी आंसर करेगा कि दिस नंबर ऑफ केसेस आर इन योर लोकेशन. तो वो मेरे को हैंडल करने के लिए सैमसंग प्रोजेक्ट में मिला था. इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस. लाइक तुम्हारे मेंटर्स भी हेल्प करेंगे, तुम्हारे टीम मेंबर्स भी हेल्प करेंगे. Okay. और लास्ट में तुमको मतलब सीखने को भी मिलेगा और वेलकम किट भी मिल सकता है. लाइक दिस इज अ बोनस पार्ट फ्रॉम सैमसंग. तो आपको सैमसंग से आपको बोनस किट भी मिलता बोनस किट भी है, वेलकम किट. वेलकम किट एंड सर्टिफिकेट Wow. इज देयर, एंड इवन अ कैश प्राइस. पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप बहुत सारे स्किल्स इम्बाइब कर सकते हो, आप सीख सकते हो, Sure. एंड दैट टू आपके पास एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपके पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो जाएगा रेज्यूमे में शेयर करने के लिए.
तो विनय, कैन यू टेल अस कि आपका टीम कन्फिग्रेशन कैसे था? आपने आप कैसे अपने 6 मंथ्स को चैनलाइज किया है? एंड फर्दर आपके प्रोजेक्ट्स में आपने क्या क्या स्किल्स सीखा अपार्ट फ्रॉम मशीन लर्निंग? अपार्ट फ्रॉम मशीन लर्निंग मीन्स जावास्क्रिप्ट। हम्म, मेरे को जावास्क्रिप्ट पहले नहीं आता था, ओके। बिफोर सैमसंग प्रिज्म। बट आफ्टर सैमसंग प्रिज्म आई नो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट। वाह। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में तुमको बिट्सबी का मेन कैप्सूल पार्ट है वो जावास्क्रिप्ट में है। हम्म, और उसको भी एडवांस नहीं है, सिंपल लॉजिक जावास्क्रिप्ट है, तुमको लॉजिक पता होना चाहिए। हम्म, ठीक है, लॉजिक कर नहीं, सिंटैक्स के लिए जावास्क्रिप्ट यूज किए। और मंथली मतलब देयर विल बी अ 3-4 रिव्यू प्रोसेस, हम्म, जिसमें तुम्हारे मेंटर्स पूछेंगे तुमने क्या रिव्यू किया और क्या प्रोग्रेस है तुम्हारा। ओके। और टीम मेंबर्स भी थे। इन माय बैच 2 सीनियर्स वर देयर ओके। एंड 2 वर फ्रॉम माय बैच। ओके। सो इट वाज अ मिक्सचर ऑफ टीम। अच्छा, वाह। दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन आई गेस इट कैन हैव। सो विनायक, अब मेरे को कुछ दिन पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि भैया ये गूगल क्लाउड प्रोग्राम, जो गूगल क्लाउड आर्केड प्रोग्राम, ये जो कॉलेज में अभी न्यूली जस्ट लॉन्च हुई है, तो फ्रॉम बाय गूगल, ओके, सो गूगल एजुकेशन, सो आपने 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड किया है, आपने उसे अपने हमारे कॉलेज में होस्ट करवाया है एज अ फैसिलिटेटर। तो आप मुझे थोड़ा, या फिर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि क्या होता है ये 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड, और आपका एक्सपीरियंस कैसा था इसमें? या लाइक इन मतलब गूगल हर साल कुछ इवेंट्स करवाता है, डिफरेंट प्रोग्राम डिफरेंट टाइमलाइन में। मार्च टू अप्रैल क्लाउड आर्केड प्रोग्राम, एंड सितंबर अक्टूबर में 30 डेज ऑफ क्लाउड। ओके। लकीली इन 2021 आई गॉट अ चांस कि हम्म, मेरे को फैसिलिटेट करने का मौका मिला ओके। of ITR college, and I am happy to share that more than 400 plus students were ओके। able वाह। to complete and get swags from Google. ओके। बोनस पार्ट वही है, तुमको सीखने को भी मिलेगा और गूगल स्वैग्स भी देगा। अच्छा, आप सीखो और प्लस आपको स्वैग्स है, swag स्वैग्स में मींस देयर विल बी बैग, टी शर्ट, हम्म, वाटर बॉटल, सब मिलेगा। मतलब वो एज पर क्राइटेरिया रहेगा कि आपको इतना स्किल बैचेस होना पड़ेगा। हम्म, उसके लिए हमने सेशंस करवाए थे। मी एज अ फैसिलिटेटर हैव टू क्लियर दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स डाउट शुड बी क्लियर। हम्म, तो मैंने सबके लिए सेशंस करवाए, वर्कशॉप्स करवाए, वेबिनार्स, alumni of ITR. हम्म, One of the alumni was Arshad Nawaz. हम्म, I approached him through LinkedIn. हम्म। He was able to take a session on Google Cloud, ओह which वाह। was conducted during these 30 days of October. वाह, ग्रेट। So आपको एक्सपोजर मिल रहा है कि प्रीवियस alumni से how Google Cloud is connected in professional work, in ओके। corporate, and what are the benefits. आपको स्टूडेंट लाइक कॉलेज में भी एक्सपोजर मिल रहा है कि हम कॉलेज एज अ स्टूडेंट आई एम गेटिंग टू लर्न क्लाउड क्विट लैब प्रोग्राम, एंड इवन व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ आई लर्न टुडे एंड गो टू कॉर्पोरेट टुमारो, देन इट इज दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेशन। ओके, ग्रेट। सो विनायक, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अब हम मुद्दे पे आते हैं, ठीक है? तो अब प्लेसमेंट्स की बात करते हैं एक्चुअली। तो आप बहुत सारे बच्चों को, इवन मैं भी जब थर्ड ईयर में था तो मेरे को सेम चीज प्रॉब्लम थी कि हम डीएसए भी है, एप्टीट्यूड भी है, सॉफ्ट स्किल्स भी है, और प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं। हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में स्टार्ट करते हैं और उन्हें पता नहीं रहता कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, या फिर किसको इग्नोर करें, या फिर किसको करें, या फिर अगर सभी को करें तो कैसे टाइम को मैनेज करें। आपने अपने टाइम में कैसे इसे मैनेज किया था, और थोड़ा सा हमें आइडिया दीजिए। या मीन्स ये क्वेश्चन सब थर्ड ईयर्स वाले को होल्ड हम्म, कि हाउ टू मैनेज। भैया मेरे को रेज्यूमे भी करना है, भैया मेरे को प्रोजेक्ट्स, भैया मेरे को डीएसए। राइट। मतलब ये तीन, ये टोटल 5 चीज आर इंपॉर्टेंट फॉर प्लेसमेंट। डीएसए, डीएसए, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऊप्स, एंड एप्टीट्यूड। ये 5 चीज अगर क्लियर है तो यू कैन क्लियर अ गुड प्लेसमेंट कंपनी लाइक Publicis ओके। Sapient, Deloitte. These 5 things should be on your fingertips. ओके। वरना थोड़ा लैक रहेगा कि यू विल बी गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, भैया मेरा इंटरव्यू रिजेक्ट क्यों हो रहा है। तो ये 5 चीज में कहीं तुम्हारा लैग हो रहा है। ओके। तुमको इंटरव्यू में पूछेगा डीएसए का क्वेश्चंस लाइक मर्ज सॉर्ट के, अच्छा। तो ये डीएसए का भी होना चाहिए। हम्म, और इन सबको टाइम मैनेज करने के लिए तुम डीएसए का 1 आवर हम्म, डेली हम्म, फ्रॉम हैकरैंक, लीड कोड या टीट फॉर इट से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। हम्म, हैकरैंक का 5 स्टार आता है, जावा, सी प्लस प्लस, वो ओके। कर सकते हो। या 30 डेज ऑफ कोड भी आता है, उससे अच्छा। भी 30 डेज ऑफ कोड इज फॉर बिगिनर्स। अगर ओके। कोई आज स्टार्ट कर रहा है और और द तुम्हारा सेम हैकर प्लेसमेंट एक्टर। प्लेसमेंट 50 डेज के बाद है, तो ओके। तुम सेम हैकरैंक प्लेटफॉर्म में आज स्टार्ट करके तुम्हारा 50 डेज का नेक्स्ट जो इंटरव्यू होगा उसको तुम क्रैक कर सकते ओके। हो। वाह। और डी और एप्टीट्यूड के लिए तुम आर एस अग्रवाल को फॉलो कर सकते अच्छा। हो, और इंडिया बिट्स है। हम्म, इन सब वेबसाइट में एक्सप्लोर करो एप्टीट्यूड, क्योंकि कुछ कंपनीज प्योरली एप्टीट्यूड में जाएंगे, हम्म, कुछ कंपनीज प्योर डीएसए को जाएंगे।
कुछ कंपनीज म्यूचुअली पूछ रहे हैं, सो Got it. यू हैव टू बी गुड इन ऑल दीज फाइव. And majorly for online assessment आपको तो aptitude and basic coding तो चाहिए ही चाहिए. चाहिए. That is the main thing. And then आपका soft skills part आता सॉफ्ट है. स्किल्स तुम्हारा इंटरव्यूज में आएगा, ताकि तुम यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ. लाइक अगर कोई कंपनी में तुम एचआर राउंड तक गए हो, तो अगर उस कंपनी का तुम्हारा नाम ही नहीं पता है या कंपनी क्या काम करती है, वेदर इट इज सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड, ये अगर तुमको नहीं पता है तो थोड़ा पता कर रहा है, चिल मारो. Rightly मतलब pointed थोड़ा to say. नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए थोड़ा प्रेशर करो. Do a bit of homework before you क्योंकि go for an interview. अगर तुम इंटरव्यू पूछता है व्हाई वुड लाइक टू जॉइन पब्लिसिस सेपिएंट, व्हाई वुड लाइक टू जॉइन डेलॉइट, तुम उसका आंसर नहीं दे पा रहे, तो वो तुम्हारे अंदर लैक है. तुम True. क्योंकि उसका आंसर अगर तुम ये दे दो कि यस सर सर इंटरव्यूज चल रहा था कैंपस प्लेसमेंट में से, मेरे को मौका मिला सर, पास हो गया है, तो अभी एचआर राउंड आ रहा है, तो एचआर राउंड में पहुंच गए, ये अगर आंसर दोगे तो ये नहीं. क्योंकि तुमसे इंटरव्यूअर पूछ This रहे shows हैं कि व्हाई हम यू शुड बी interested नहीं हायर. है. हाँ. Like you should be unique, or you have the ability to make the company unique. वरना हजारों पोस्ट है, why you should be selected? That is the question. Rightly pointed out this. So, major अब summarize करें तो before any interview, get yourself prepared, not only in terms of technical aptitude, as well as doing a bit of homework about the company, कि क्या company है, क्या चीज़ के regarding, and why personally you are interested for that company. ये सबसे unique है. Rightly pointed out. So, Vinayak, my next question will be: Can you give us a walkthrough of your entire interview process at Publicis Sapient, and can you give some tips or advice to individuals who are preparing for such technical interviews? Yeah. Like first search like what Publicis Sapient is and what does the company do. तुमको ये पता होना चाहिए, अगर तुमको Publicis Sapient क्रैक करना है तो वो सर्विस बेस्ड है या प्रोडक्ट बेस्ड है, वो पता होना चाहिए. और मेरे टाइम में हाँ, मतलब कैंपस प्लेसमेंट में मेल आया था कि पब्लिसिस सेपिएंट है, लाइक पब्लिसिस सेपिएंट इज कमिंग टू माय कैंपस इन दिस पर्टिकुलर डेज. I searched in Deed for Reads. Deed for Reads is the best portal for B.Tech students. Okay. उसमें तुमने मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखा. इंटरव्यू एक्सपीरियंस Even you have the interview experiences at Lead Code also. Yes. लीड कोड है, उसमें तुम एक्सप्लोर करो कि पब्लिसिस सेपिएंट का बेसिक क्वेश्चंस क्या होगा. Okay. तो उसमें मैंने देखा कि 3 to 4 क्वेश्चंस स्टूडेंट राउंड पूछता है ऑनलाइन असेसमेंट में. Okay, I have prepared the basic to moderate question. Okay. और टेस्ट के थे, मेरे को 3 क्वेश्चंस आए थे. 2 questions were of coding question and one was of JavaScript based question. Like you have to do a particular question on JavaScript. Okay. But अगर कोई और तो JavaScript नहीं आता है. This is specific requirement. Luckily मेरे को JavaScript आता था. Samsung Prism में मैं गया था. तो इसीलिए luckily थोड़ा आ गया कि I know that this question can be solved in JavaScript using this. Yeah. So we can clear it. So next question would be: What advice would you give to newbies just starting in their career in tech, and what do you think are the key qualities that set successful people or people who are selected in good companies apart from the other? Okay. The key companies, like you should be not strong, but at least you should be able to build the logic of the problem. If you got the DSA question, like you think this question needs merge sort, you should be able to think that this question needs merge. अगर तुम सोच रहे हो कि इसको मैं बबल सॉर्ट से ही कर दूंगा तो नहीं पाएगा. तुमको डिफरेंटली अप्रोच करना पड़ेगा हर क्वेश्चन को. बाय वो ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करने के लिए हेल्प होगा. और इसके साथ अगर तुमको टेक्निकल भी क्लियर करना है तो वो डीएसए, एप्टीट्यूड, सॉफ्ट स्किल्स, ये सब के लिए भी टेक्निकल इंटरव्यू में देखते हैं. लाइक यू हैव टू एक्सप्रेस योर आंसर. अगर इंटरव्यू में तुमको पूछेंगे कि सर मेरे को ये कोडिंग करो, तुमको कोड ऑन स्पॉट करके दिखाना पड़ेगा. Okay. तो वो तुमको प्रैक्टिस आना चाहिए कि हम मैं इतना स्पीड में कर सकता हूँ, इतना टाइम में कर सकता हूँ. अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड, तुमको आना चाहिए कि हाँ एटलीस्ट आई कैन ट्राई. Okay. Great. And this comes by practice, right? प्रैक्टिस. तो आप अपने वेट मत करो कि अब थर्ड ईयर में हो गए एंड देन यू विल स्टार्ट विद ऑल द टाइम ऑफ 1 ईयर एंड एकदम पूरा हेक्टिक करके अपने आप सर दिस इज अ मिसकंसेप्शन. लाइक देयर इज नो टाइम लिमिट. टुडे you can start preparing and tomorrow you can try the company. It may be Publicis Sapient, it may be Microsoft. Right. It's your dedication, like how you spend these days. Well, तुम डीएसए कर लोगे तो एप्टीट्यूड भी हो जाएगा, ना कि तुम्हारा डीएसए ही करोगे तो एप्टीट्यूड नहीं देखोगे तो नहीं होगा. तुमको दोनों ही करना पड़ेगा. Okay. दोनों के लिए अलग अलग बोल रहे हैं. और एचआर राउंड स्पेसिफिकली इन पब्लिसिस सेपिएंट Okay. कि वो तुमको सिचुएशन बेस्ड देंगे. अच्छा.
मतलब ऐसा जनरल एचआर नहीं होगा कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस। देयर विल बी अ सिचुएशन बेस्ड। अगर तुम मैनेजर हो, तुम्हारा टीम काम नहीं करता, ओके। व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? ओके, सिचुएशन सिचुएशन बेस्ड। ओके। सो ये पब्लिसिटी सेपिएंट का इंपॉर्टेंस है। और पब्लिसिटी सेपिएंट का कोर वैल्यूज या हर कोई भी कंपनी का कोर वैल्यूज तुमको एचआर राउंड में पता होना चाहिए। राइट, किस बेसिस में तुम, कौन सा कंपनी क्या करता है, ये पता होना चाहिए। गॉट इट। विनायक, मैं आपसे बहुत कुछ सीखा एंड रियली इंटरेस्टिंग आंसर्स दैट आई गॉट। सो आई मस्ट बी I'm pretty sure that our viewers are also interested to know कि आप अपने प्रोफेशनल, आप जब ज्वाइन कर लोगे एज एस टी एट पब्लिक सेपिएंट, आप कैसे प्लान किए हो कि आप अपना प्रोफेशनल वर्क एंड पर्सनल पैशंस, मे बी अ इंटरेस्ट, मे बी अ हॉबी दैट यू वांट टू परस्यू, आप कैसे अपने टाइम को बैलेंस करोगे? आप कैसे अपना आपके वर्क आवर्स के बाहर में भी आप अपना पैशन को फॉलो करोगे? यस, ये सबको क्वेश्चन रहेगा कि अगर तुम बोलोगे मेरे को प्रेशर प्रेशर है, वर्क प्रेशर रहेगा, बिकॉज कंपनीज हायर्ड यू फॉर देयर वर्क, यू विल हैव टू हैंडल। बट 24 hours फॉर वर्क इन द कंपनी इज नॉट गुड। ओके। तुमको अपना टाइम थोड़ा ऑफ निकाल देंगे, लाइक फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात कर सकते हो। ओके। मेरा हॉबीज में मैं चेस खेलता हूँ टाइम अच्छा। में, फ्री टाइम में चेस खेलते हैं, वरना वॉकिंग करते हैं, पार्क में वॉक कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, नियर बाई साइकिलिंग कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक एटलीस्ट 1 hour गो विथ योर फ्रेंड्स। ओके। ताकि तुमको अपना इंडिविजुअल वो बोर भी नहीं होगे और फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो करंट अपडेट भी पता चलेगा। क्योंकि वर्किंग इन अ प्रोफेशनल लाइफ इज गुड एंड लेटेस्ट एंटरटेनमेंट शुड आल्सो बी यू नो। लाइक तुम प्रोफेशनल वर्क में काम कर रहे हो और तुमको पता नहीं कल आईपीएल मैच किस रहा था या कौन जीता तो वो भी अपना एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना। एग्जैक्टली। क्योंकि फुल कंपनी प्रेशर और कंपनी वर्क इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड योर मेंटल प्रेशर। It will just lead to burnouts, right? So yeah, avoid, just have a mix of everything in your life. Pursue your passion, work on to your on developing yourself, as well as work for a company. So great. So Vinayak, it was great interacting with you. Really a lot of learnings for me as an individual, as well as I'm pretty sure that our viewers have also learned a lot. So it was really great. Thank you, Saurav, for to get interviewed with you. It was a nice experience. Great.